Good morning, class 4. I hope you all are good and please be safe and stay at home. Don't go outside. So it will be helpful for you and for all also. So today we will study what we will study. We will study the new topic which is noun. What? Which is noun. Noun. Noun is today's topic, and you have to open page number 26 and 27 in your English literature book. And so, what is a noun? What is a noun? आप लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हो कि noun क्या होता है, noun क्या है, okay? So noun is the name of a person, place, thing और फीलिंग भी हो सकती है, स्टेट भी हो सकती है. ये स्टेट बोले तो नॉट दैट काइंड ऑफ स्टेट, स्टेट कि हम किस तरीके से हैं, कैसे हैं, ठीक है. तो स्टेट भी आती है उसमें, फीलिंग भी आती हैं. सो दैट इज नाउन. नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन. नाउन, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. जो नाउन होता है उसमें पर्सन इंक्लूड होते हैं, प्लेस इंक्लूड होता है, थिंग्स और एनिमल्स ऑल्सो. ओके, तो जो भी है, हम कुछ भी है उसको हम किसी ना किसी नाम से बुलाते हैं. ठीक है, कुछ भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, उसको हमने एक नाम दिया हुआ है, राइट. हम बिना नाम के उसको बुला ही नहीं सकते. वी कांट कॉल देम. So it's easy for us also that we have given names of all those things or all those people. So that's why it's easy to identify that person. It's easy to call that person or anything. So naam is very zaruri. Name is very important for everything. So a noun is the name of a person. वो जो noun होता है वो name of a person हो सकता है, place, animal और thing हो सकते हैं. तो उसके बाद जैसे मैंने example लिखे हुए हैं, there are some examples given here. So India is a noun, so it's the name of a country. All right, it's the name of a country. So India. Sumit is the name of a boy. Okay, next one is girl. We can easily identify that person from these nouns. Okay, so girl is given for someone that kind of person is a girl. Okay, so village की भी एक definition है कि इस तरीके का एक village होगा, गांव होगा. ठीक है, और पेन भी एक, पेन क्या है, एक नाउन है, एक चीज है. ठीक है, तो ये सभी किसमें आते हैं, नाउन में आते हैं. ठीक है, तो हर किसी को, हर चीज को एक नाम से हम बुलाते हैं, जिसे हम नाउन बोलते हैं. वो पर्सन हो सकता है, प्लेस होता है, एनिमल और थिंग हो सकती है. So kinds of noun. What are the kinds of noun? So what are the different kinds of noun is? First one is proper noun. First one is proper noun. Proper noun is, what is proper noun? At the name itself suggests that proper nouns are names of particular persons, places, animals or things, whatever. ठीक है, जो भी चीजें हैं, जितने भी हैं प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये बताता है पर्टिकुलर के बारे में. ठीक है, मैंने कहा कि कंट्री, मैंने कहा कंट्री, तो वी डू नॉट नो अबाउट द कंट्री. क्या कंट्री, कौन सा कंट्री. जब हम पर्टिकुलर हो जाते हैं उसके बारे में कि दैट इंडिया इज द कंट्री. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, नॉट कंट्री. ठीक है, इफ इट सिंपली से कंट्री, we do not know which country they are talking about. Okay, but we say the India, then we could get that they are talking about India. So India is the particular name. Delhi is the particular name of a state or a city. All right, so if we say city, we do not know which city we are talking about, but if we say the name of that particular state or city, so then we understand that there is a proper noun. Means Delhi is the proper noun. It's the name given to that city. So Delhi is the proper noun. Amit is also the name of a boy, name of a person. All right, so it's also a particular name of that person. So there is
So there are so many boys, but we have given the name to that boy is Amit. So that's why we have so many names. All right. So Delhi, Amit, and next one is Subhash Park. I have written here. So there are so many parks, but if you want to call someone and you want to say that you have to come here in the park, so, but he doesn't know that which park you are talking about. But if you mention the name of the park, particularly mention that uh, park's name, then only he will come there. Okay. So what is the name of the park is Subhash Park I have given here. Okay. So these are the proper nouns where we know the particular names of those person, place or thing, whatever it is. Okay. Now move on to the next common noun. What is common noun? I have told you in proper noun also if you have uh, concentrated it on. I have told you what is common noun. What is common noun are the general names given to those particular names. Okay, so they are the general names of similar groups. Like I said, Delhi. What is Delhi? Delhi is the city. All right. So these are common names given to many things or cities or place, whatever. So city, there are so many cities. Okay, there are so many girls, but so that's why common name, common noun, park, village. So these are the common names given to the those things or similar groups. Okay, there are so many that city includes city includes so many names like this city आगरा city दिल्ली और भी बहुत सारे सिटी हैं तो वो उनको इंक्लूड करता है कॉमन नाउन सिटी है गर्ल है कौन सी गर्ल वी डू नॉट नो अबाउट दैट गर्ल सो these this will come in general. What? In general, they are the general names of similar groups of persons, animals, or things. Okay. So city है, men है, women है, person है, park, girl, village, boy, so many. Okay. Now move on to the next collective nouns. What are collective nouns? What are collective nouns? Collective nouns are the group. ये क्या होते हैं ये ग्रुप होते हैं जैसे एलिफेंट है जब एलिफेंट बहुत सारे होते हैं ग्रुप में होते हैं तो उसे हम एक नाम देते हैं जिसको हम बोल सकते हैं अ हर्ड ऑफ एलिफेंट अ हर्ड ऑफ एलिफेंट तो हमने उसे एक में शामिल कर लिया जो ग्रुप है पूरा उसको हमने एक वर्ड में ले लिया अ हर्ड ऑफ एलिफेंट हिंदी में आप बोलते हो झुंड है हाथियों का झुंड है ना तो मे बी आई डो नॉट नो अबाउट हिंदी बट अ हर्ड ऑफ एलिफेंट ठीक है जो एलिफेंट का ग्रुप है उसे हम क्या बोलेंगे अ हर्ड ऑफ एलिफेंट सो दैट इज द ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स ओके नाउ अ क्राउड ऑफ पीपल लोगों की जो भीड़ होती है उसे बोलेंगे अ क्राउड ऑफ पीपल ओके so move on to the next abstract noun. What is abstract nouns? Abstract nouns are the names of qualities, ideas, emotions, actions, feelings and conditions. ठीक है जो abstract nouns होते हैं वो names होते हैं जो किसी की qualities होती है जैसे beauty है ठीक है bravery है ठीक है तो ये सब किसमें आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये फीलिंग्स होती हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं देख नहीं सकते हैं सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं वी कैन जस्ट फील दैम नॉट टू टच दैम नॉट टू हियर दैम नॉट टू सी दैम ओके ओनली जस्ट वी कैन फील दैम ओके सिर्फ हम उन्हें फील कर सकते हैं जैसे ब्यूटी है ब्रेवरी है तो ये सब क्या है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कंडीशंस हो सकती हैं किसी की तो दे विल कम इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन ब्यूटी ब्रेवरी किसी की सुंदरता है तो क्या हम उसको देख सकते हैं मतलब हाँ वो बंदा सुंदर है लेकिन ब्यूटी द वर्ड तो ब्यूटी को हम नहीं देख सकते ब्रेवरी कोई इंसान नहीं है ब्यूटी ब्रेवरी तो दीज आर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन ब्यूटी ब्रेवरी बहादुरी किसी की सुंदरता किसी की तो these that type of words will come in abstract noun
Now move on to the material noun. What is material noun? What is material noun is, material noun are the names of materials or substances used for making things. Okay, material nouns are the names of materials or substances which is used for making things. Like this is the bottle. क्या है ये? एक बॉटल है, ठीक है, ये बॉटल है. So which material we have used to make this bottle? Which material we have used to make this bottle is material noun. So which material we have used in this bottle? So plastic. All right. So plastic is the material noun. This bottle is made by plastic. So plastic is the material noun. All right. So one more example, if I'll say, this is the duster. This is the duster. It is made by wood. ठीक है, ये किसका बना है? लकड़ी का बना है. तो लकड़ी जो है इसमें क्या है? मटेरियल नाउन है. ओके, सो wood, iron, plastic, all that are called material noun. That will come in material noun. All right. So we will study about in your book on page number 26 and 27. There is the one exercise is given. So we'll do the exercise and then move on. Okay, I'll show you the book. Yes. Now, as you can see, nouns is on page number 26. Read the following paragraph carefully. I went with my parents to a safari park when animals were not kept in cages, but in huge outdoor enclosures. I saw a herd of elephants near a pond. A pride of lions sat under the trees while a gaggle of geese. तो ये जो भी पिंक कलर्ड है वो सभी क्या है? आपके कलेक्टिव नाउन्स हैं. ऑलराइट. तो gaggle of geese moved about on the green grass. There was a troop of monkeys on the trees. I was amazed to see the animals. It was a great trip. The words herd, pride, gaggle, and troop stand for groups of animals. They are called collective nouns. And collective nouns are the names of groups of animals, people or things taken together. जब हम उनको एक साथ ले लेते हैं, कुछ भी हो सकते हैं वो, names of people हो सकते हैं, people हो सकते हैं, animals हो सकते हैं या फिर things हो सकते हैं, तो वो आते हैं collectively. जब हम उनको एक ग्रुप में शामिल करते हैं, एक वर्ड लेते हैं, as a whole, as one whole उनको रिगार्ड करते हैं, तब वो collective nouns होते हैं. So collective noun is considered a single noun. Okay. Now there is one exercise. Fill in the blanks with appropriate collective nouns from the box. So first one is, a dash of bees attacked the old man. So for bees we use swarm of bees attacked the old man. Second one is, so first one is swarm. First one is swarm. Then second one is, the children looked at the dash of ships sailing by. So what? So second one is a fleet. At the fleet of ships. Third one is a dash of books. So books, for books we use pile. 3. Next one is, a pile of books is kept on my table. Next one is, Sharad saw a dash of football players in the ground. Sharad saw a team. 4. Next one is, the fisherman caught a dash of fish in the net. So we can say shoal. What? Shoal भी कहते हैं हम और school भी कहते हैं. क्या कहते हैं? Shoal and school. Now abstract nouns and material nouns. जैसा कि मैंने आपको ये समझा दिया है कि abstract noun क्या होता है. जैसे Goa is famous for its beauty and lovely beaches, and second this one, beauty is the abstract noun and gold is the expensive. So gold is the material noun. Okay, so I have explained you this. So material nouns में जैसे wood, milk, sugar, etc. will come. Okay, now what you have to do is